उनके लिए, for them. لهم لهم لهم. The second way to say, दूसरा तरीका कहने का, अलशान हम, अलशान हम, अलशान हम. तीसरा तरीका कहने का ये है, the third way to say is अलशान हम, अलशान हम. And the fourth way, चौथा तरीका ये है, हग हम, हग हम, hug him. All of these means the same for them. इन सब का मतलब एक ही है, उनके लिए. All of these are used by Arab, native Arabs. If you are living in GCC countries like Gulf countries, you will get to hear all of these accents at the same time because people come from different places together in these Gulf countries. So the easy way is, the good thing is we're getting everything, all the dialects in the same plate. So please learn and teach as well. Iski tarah, like this one. Like this one. مثل هذا. مثل means like. هذا is this. مثل मतलब जैसा. هذا मतलब ये. ये जैसा मतलब इसकी तरह. उसकी तरह. Like that one there. A little far. مثل هذاك. उसकी तरह. هذاك मतलब उसकी. مثل मतलब तरह. مثل هذاك उसकी तरह. مثل means like. هذاك means that. Like that one. ऊपर. Up or top. It's known as fog. 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 नीचे. Down or bottom. We will say تحت. 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 सामने. In the front. في الأمام. في in the أمام. Front. सामने. في الأمام. पीछे. On the back side. في الخلف. في الخلف. في الخلف. कौन सा? Which one? أي واحد. أي واحد. أي واحد. أي means which. واحد means one. أي मतलब कौन. واحد मतलब एक. कौन सा इसका मतलब बनता है कौन सा. और and उर्दू में कहते हैं ना ये और वो जो और है ना इसका तर्जुमा इंग्लिश में कहते हैं and. wa means and. This and that. The and there is a single letter in Arabic is wa. सिर्फ wa का जो लफ्ज़ है इसका मतलब है कि और. अगर if. The if word is لو يعني अगर. If. The second word to say is إذا. दूसरा तरीका है إذا मगर लेकिन. The but word but. لكن काश के ऐसा होता. I wish. काश के. أتمنى